Okay friends, welcome to Vinaya. Myself Piyush Visaria, your trainer, guide, mentor, your friend. Okay, last session हमने सीखा था about color picker. Okay, how to choose colors. Quickly recap. यहाँ से आप color choose कर सकते हो. ये hue saturation के बारे में बताया था मैंने, right? ये color slider के बारे में मैंने बताया था. We spoke about this background colors also. Hue saturation, brightness, red, GB, same magenta, yellow, black. Today we are going to learn about brush tools. Brush tool, basically. So as you know कि आप जब पेपर पे पेंट करते हो you need some colors. Okay, you pick some colors, right? So I've chosen this color. Okay, ये मैंने यूज सैचुरेशन से आके मैंने सपोजिंगली ये कलर चूज किया है, सपोजिंगली ये ब्लूइश या मैजेंटा या पर्पल. But now I want to paint this. I want to paint this photograph. Okay, on a canvas or whichever, या ये फोटो पे. So you use physical world में आप क्या करते हो? You use brush tool. ब्रश आप पेंट करते हो, पानी में मिलाते हो, कलर मिक्स करते हो, then you paint it on a paper. लाइट डाइल्यूट करते हो, पानी के थ्रू से आप डाइल्यूट करते हो, राइट? सैचुरेशन, ब्राइटनेस आप एडजस्ट करते हो कलर के थ्रू, वाटर के थ्रू. उसी तरह से यहाँ पे भी ब्रश टूल है जिससे आप ये पेंट कर सकते हो. यू कैन पेंट इट. ओके, नाउ हाउ डू यू डू दैट? सो यू कम टू दिस टूल, द फर्स्ट टूल. हियर यू कैन सी दिस टूल बॉक्स में आके यहाँ पे आइए. ये टूल है, इसका नाम है ब्रश टूल. द शॉर्टकट इज बी. यू सी दिस बी. इफ आई एम समवेयर एल्स एंड इफ आई प्रेस बी, सो बी फॉर ब्रश. ओके, यू कम एंड यू सिलेक्ट दिस द फर्स्ट टूल. Okay, now you can see this is a cursor. बड़ा सा ब्रश का साइज है, बेसिकली बहुत बड़ा साइज है. Okay, now in a physical world also, what do you see brush sizes. छोटी साइज के ब्रश होते हैं, बड़े साइज के भी ब्रश होते हैं, correct? Similarly here also you have brush size. Okay, now before starting with brush size and everything, let us start painting. So I've chosen this magenta color as a foreground color and red as a background color. I choose red as the blue as a background color. और मैं ब्रश में आया यहाँ पे, यहाँ से मैंने पेंट करना चालू किया. I can paint. मैं ये पेंट कर रहा हूँ. मैंने ये पेंट करना चालू कर दिया. तो पेंट हो रहा है, तो कौन सा कलर पेंट हो रहा है? ये फर्स्ट वाला कलर पेंट हो रहा है जो है हमारा फोरग्राउंड कलर. तो ब्रश टूल हमेशा फोरग्राउंड कलर ही पेंट करेगा. इफ यू वांट टू चेंज द कलर, यू कैन कम हियर एंड यू कैन चेंज द कलर एंड यू कैन स्टार्ट पेंटिंग अगेन. सो अगेन इट इज पेंटिंग इट यूजिंग foreground color. If you want blue color, instead of selecting, you just switch it up. इसको switch कीजिए. X कीबोर्ड का शॉर्टकट X है on Windows और Mac. You can choose this X. Start painting it. So it starts with the foreground color, the brush tool. I undo it. Control Z, Command Z from the keyboard. As I said, the next tool, as I said, was eraser tool. So you come out here and this is the eraser tool. The first tool that you see here. ब्रश के बाद ये के बाद एक दो टूल छोड़ के इरेजर टूल, शॉर्टकट इज ई. इसमें भी ब्रश है, कौन सा कितना बड़ा ब्रश से आपको इरेज करना है. रिमेंबर, ब्रश टूल से हम फोरग्राउंड कलर पेंट करते हैं, तो इरेजर टूल से, जैसे मैंने सेकंड सेशन में भी बताया था जब मूव टूल कर रहे थे, यू ऑलवेज गेट बैकग्राउंड कलर. तो इरेज कर रहा हूं मैं. दिस इज अ बैकग्राउंड कलर दैट आई एम गेटिंग इट. अगेन आई गो टू द ब्रश टूल. दिस इज द फोरग्राउंड कलर. आई गो टू इरेजर टूल. I get as a background color. I hope it is clear. Okay, I'll revert this file. जो original state था file का, I'll come back to that. So it's reverting it. Now let us see more about the brush tool. I come out the brush tool here, and you can see these options are there. There are a lot of options for the brush tool. Okay, you can go to Windows and options. I switch these options off. You don't see these options. I switch these options on. See these options. Sometimes you don't see the toolbox also. Why? Because this toolbox से यहाँ से off होता है. Switch this on by go to window and tools. I choose this brush tool. I can paint it. अभी मेरा paint color कौन सा? Foreground color is blue. I come out here. Come out on the second tab where I can choose the size of the brush. छोटा brush चाहिए. It's a very small brush. I want a bigger size. So it's a big brush. How hard you want that brush to be? आपको brush का smoothness कितना चाहिए और hardness कितना. Now you see this. जब मैं पेंट करता हूँ तो साइड में उसके एजेस जो देखते हो ब्रश की एकदम सॉफ्ट आती है, राइट? यू सी दिस सॉफ्ट बिकॉज करंटली आई हैवंट गिवन एनी हार्डनेस टू द ब्रश. आई से 100% हार्डनेस, तो ये पूरा फ्लैट हार्ड ब्रश आया. यू सी दिस. आई विल रिवर्ट इट बैक अगेन. आई विल शो इट. दिस इज कंप्लीटली हार्ड ब्रश. यू सी दिस एजेस. द एजेस आर वेरी हार्ड. आई reduce the hardness so it is a bit soft. I reduce it this.
It's bit soft again. Reduce it more. Come आया. I hope it is clear. There are other presets also available for the brush tool. You can choose these different types of brushes that you want. कौन से brushes चाहिए आपको? Soft round brush चाहिए तो soft round brush आएगा ये. आपको soft round preserve brush presser size चाहिए तो ये इस तरह से आएगा. So there are different types of presets. You can go through it. You can choose it whichever you want it. You can apply it to that. Okay, dry media brushes है ये देखिए patterns के साथ है. हल्के you can see these patterns coming up. Ultimate charcoal brush है. ये charcoal shape का brush है. अब इसमें थोड़ी साइज छोटी है तो साइज बड़ा करके हम देखते हैं दूसरे चारकोल शेप. साइज बड़ा करके देखिए. Let's say this is the ultimate pastel paluza. This is another type of brush. So this is a different kind of brush that you see. So different types of brushes. Wet media brushes है, wet brushes है. Let's say I want this paint box. तो ये paint box की तरह आता है. I'll revert this back again. F12 is a shortcut from the Windows or Mac. इस तरह से ब्रश आता है. ये टाइप का पैटर्न है ये बेसिकली. See this? ये एक टाइप का ब्रश है. ये foreground कलर ले रहा है. You can explore these different types of brushes that you wanted. कुछ स्पेशल इफेक्ट्स वाले ब्रशेस है. स्पेशल इफेक्ट्स वाले स्पैटर चाहिए तो इसको स्प्रेड कीजिए. देखो स्प्रेड हो रहा है. स्प्रेडिंग इट. राइट, जस्ट क्लिक एंड ड्रैग. अलग अलग टाइप के ब्रशेस हैं. ये चाहिए आपको तो ये भी देखिए स्प्लैश कर रहा है. राइट, use this brush again, it will spread it out. I want different colors से पेंट हो रहा है. लीफ का पैटर्न है. स्क्रीनशॉट ब्रशेस है. ये अलग टाइप के ब्रशेस है. ट्रांसपेरेंट ब्रशेस आ रहे हैं. You can explore these kind of brushes. There are other brushes also here. You can choose these calligraphic brushes चाहिए. ये वो calligraphic brush मिलेगा. Okay, you can try this out here. इसके अलावा I just take a general brush, normal brush. I increase the size of this brush. Now you see this here. This is some roundness. Now sometimes if you want to work with calligraphy, so you have different types of brush for the calligraphy. किसी की edges sharp होती है, किसी का पतला round brush होता है. You know, so you can adjust from here. I want to adjust the roundness from here. Roundness थोड़ा कम किया तो देखो ये brush ऐसा आया. So you can start using it this. So this calligraphy type आपको brush मिलेगा. You want to rotate the brush. इसको मैंने थोड़ा angle change किया तो you can rotate this brush. See this? I'll revert it back F12. I choose the light shade. Now I can check this. मैं rotate कर रहा हूँ brush को. I want to rotate this way. ये arrow पे click करके आपको करना है. You have to click on this arrow and you can rotate this brush. अब increase the size 100% चाहिए. 100% पे आ गया. Diameter उसका आप change कर सकते हो. I want to reduce the diameter like this and I want this way. I want bigger size. I want very hard brush. तो ये hard brush आया है आपको. I'll revert it back F12. This is the hard brush. Still I want more hardness. This is a complete hard brush. Right. So you can try out these kind of brushes that you wanted. Okay. Apart from this, what are other options available? I come out here. I take this soft rounded brushes. I have different modes. We'll come back to this. You want dissolve mode? तो dissolve आता है, splatter की तरह आता है. You want darken? तो color के ऊपर dark shade आएगा. Do you see this? I'll change this color. Now I can see. This is a darken mode. I want linear burn. So this is another kind of effect that it gives me. Color burn. So these are different type of brushes that you can try. These are the different types of modes. Light and light shade चाहिए मुझे. Light and color. Overlay चाहिए. Current color से ये overlay में आ गया. See this? Depending upon the color. Now it's a blue color. Let's say I choose the red color. तो red color का overlay अलग रहेगा. So this is a complete red color overlay. This is complete. Correct. I want to choose the color. So you can choose the color. It's a complete color overlay और इसमें थोड़ा बहुत similar आ गया. But when you work with different graphics, will come to luminosity. This is how it will see. Basically gray values. So you can try out these different options. Divide. दो कलर को मिक्स होकर जो तीसरा कलर जो आएगा, जैसे divide कलर. जैसे मैंने कहा था रेड का अपोजिट से आना तो रेड का अपोजिट से आना आएगा. जैसे divide.
So now let's say I take a yellow. I get a divide color. It's blue. Yellow का opposite is blue. That's a divide. Okay. Opacity आपको brush कितना opacity transparency level कितनी चाहिए brush की मुझे 50% transparent चाहिए brush. Opacity कम करनी है मतलब brush का जो color है intensity वो कम चाहिए मुझे. This is 50% 30% of opacity से मैं brush कर रहा हूँ. Instead of having pure red, the opacity is less because the brush का flow मैंने opacity कम कर दिया और light brush light color का brush लिया मैंने basically. So I want pure intensity. I want the flow to be less. हल्का सा flow intensity बराबर है but flow कम है brush का. It's not 100% flowing. थोड़ा flow कम कर दिया. So how it works? 100%. So it works in 100%. This starts with airbrush type effects के लिए काम आता है ये airbrush. Airbrush in the sense कि क्या होता है कि I see normally airbrush में ऑफ करता हूँ ना click तो एक splat हो गया. When I click on it, I'm holding the mouse button. मैं अपना mouse button पकड़ के रखा है left button. You see it spreading? No, it's not spreading. ये एक जगह पे splat होके छूट गया है बरोबर है. I want airbrush. Airbrush क्या करेगा? When I keep on clicking, it spreads out. You see this? हवा में spresh हो रहा है. हवा में spread हो रहा है. It's an airbrush. हवा में brush फैल रहा है. You see this? It's increasing. So if I click on this, it will keep on increasing. See this? हवा में ये airbrush. Okay, so it's an airbrush. It spreads out basically. So this is the airbrush tool. Okay, how much? I hope it is clear. Then we talk about the eraser tool, which was here. As I said, eraser tool will always work with background color. So it's an eraser tool. Again, same different types of brushes, size, hardness, softness. Again the same brush opacity, intensity. अच्छा brush mode है. You want pencil or you want block? So now it is currently a brush type. I want to have a pencil. So this is a pencil brush. You want a block brush? तो ये block brush है. ये एक type का block है. ये block में आप font cursor का size वगैरह बढ़ा नहीं सकते हो. It remains the same. This is how it works. I want brush, normal brush. Brush में you get to work with opacity. You get to work with size and everything. Hardness and all, softness and all, but in pencil you don't get to work with this one. You always get hard brush only. Size भी बढ़ा दो, softness मिलेगा. You'll have to click on this. This is this is a huge size that I made. Sorry. Reduces. This is a pencil mode. This is a pencil. Currently opacity is 100%. So it's a kind of a eraser tool. You can work with this eraser tool. Okay. Now I go to brush tool. I want to change the cursor size. ये जो cursor है आपका brush का जो size है उसको change करना है. I want to change the size. So you can't keep on going again and again here and change. आपको बार-बार यहाँ पे आके change करना पड़ रहा है. But what if you are working on a very big project और आपके पास deadline कम है, you know काफी deadline पे काम करो, time कम है. So you can't keep on going again and again on this tool and you know do it. तो shortcut बताता हूँ आपको. See this bracket key. Keyboard से bracket keys है, square bracket. P जो alphabet उसके बाजू वाला left and right. Okay. तो जो फर्स्ट वाला ब्रश है P के फर्स्ट वाला की है P से that will reduce the size of the brush. You see this? Size हो रहा है छोटा और उसके बाजू वाला the greater than sign, the bracket sign, it will increase the size of the brush. So this from the keyboard. Reduce the size. P से first right और P से second right is increase the size of the brush. Reduce it to reduce it more. I hope it is clear. Similarly, सारे brushes इसी तरह से काम करेंगे आपके. Eraser tool में आया again increase the size of the brush with the brackets की. Square brackets जो होते हैं, left square bracket से आपका size कम होगा, right square bracket से आपका size बढ़ेगा. It will increase. Clear? I hope this brush tool and the eraser tool is clear. Brush tool will use always foreground color. जो भी painting tools है ना वो सारे foreground color लेंगे. All the painting tools will take the foreground color. All the eraser tools, like if you want to remove the color, will always take a background color. Remember that. I hope the session is clear. Okay, please like if you liked my videos. It helps my channel to grow. Thank you so much for your kindness and support. Happy learning.